let me first discuss this entity relationship diagram. We need to discuss this today. So all of you can see my screen. Okay. So obviously an ERD diagram, as you know, I'm just recapping it. I'm pretty sure most of you know it. Is obviously utilized to design the structure of the database tables. Okay, so ERD diagrams are usually used in your system lifecycle during the design stage, where after the analysis, we have to start the designing of the software of the system. So हमारा भी जो पेपर में आता है पेपर 2 is the same thing. अगर logically if you think about it, so paper 2 is all about system life cycle के design stage. It's about analysis and it's about designing. So they're teaching you that. Analysis in the sense they're telling you that they provide you with the files, and you being the system engineer, आपने क्या करना है कि you have to create is a possible solution by normalizing your database. Now, since you are a database administrator, you are a data analyst, you have a perfect idea that in order to construct a very relevant, professional, workable relational database relationships, I need to have the following tables made out of this one particular flat file. Flat file matlab Excel ki file, which has multiple fields, but has no relationship, has no field names. So that's a flat file. A flat file has to be cut down into multiple flat files, and then it has to be imported into a relational database where we can make a relationship between them. So इसमें आप data structure को भी discuss करते हो, data dictionary को भी discuss करते हो. So I repeat again, it's part of your system lifecycle design stage. ये theory में आपने पढ़ा होगा कि whenever we say कि list down the 3 parts of the design stage, we usually say that the design stage includes data structures, flowchart, pseudocode. And data structure, if we elaborate, we actually mean is the table name, such as this. We mean is the field names, such as these. We tell that a particular field name will be a primary key, such as this. We talk about that how many characters the field length will have. Okay, so on and so. And the types of relationships, such as one to many over here. So if I talk about all this, this is the data structure. And when we refer to data dictionary, we actually means is a full elaboration, a full definition of our data structure. जब भी आप database structure का table draw करते हो, आप उसमें बताते हो कौन कौन सी fields हैं, which all of you have done. What fields do you have? Those fields that you have, what will be the data type of those fields? You will define is that apart from that, what will be the field length of those fields? Will there be any description? Will there be any type of relationship that will be made, a primary key or foreign key? Okay, so this all description that you will be doing in a data dictionary. And data dictionary basically is an elaborated form of your data structure. So while you're doing all this, आप जो normalize कर रहे हो, आप ये सब कुछ बना रहे हो, you should know the reason why you're doing it. ऐसे करने का फायदा नहीं. Do you get the picture, all of you? Yes or no? Right? Yes. Okay. So, Yes. जी बेटा, any question? Okay. So, when we talk about entity relationship, first of all, you should know what is meant by entity. When we refer to an entity, we actually mean is that a warehouse is an entity. A book is an entity, a person is an entity, a car is an entity. आप जो tables के नाम लेते हो ना, publisher, author, ये entities हैं. And whenever we go from second normal form to the third normal form, या अगर हम जब इनफैक्ट जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे भी जब आते हैं, हम एंटिटीज की बात करते हैं. क्या मतलब? Remember we talked about we're coming from first normal form to the second normal form. One of the major important rule क्या था first second normal form?
that we have to eliminate partial dependencies. Now, partial dependencies of what? Partial dependencies of entities actually. So if we have all these entities in one flat file, आप कहोगे कि you know what? Publisher information should be separated from the author. The customer information should be separate from the publisher. So on and so. And you would obviously end up saying कि अगर मेरे पास कोई author ID है इधर, then author ID has nothing to do with publisher information. Publisher ID has nothing to do with the customer information, so on and so. Okay, so this is what we do in first, second normal form. कि हम partial dependencies, we eliminate them, and we have to make sure that if there are functional dependencies, we let them go. What we mean by that is, if I have author name over here, and author ID, the address, the URL, these are all related to the author. So it's pretty easy to judge and find out how can we actually land up at second normal form. And by the way, you do know third normal form technically means what? That if there are still any partial dependencies left, they have to be eliminated in order for fully functional relational database setup to be done. So entities की आपको समझ आ, ठीक है? Right. So in entity relationship diagram, we have relationships. This is the way we can make a one-to-many relationship. Right. Okay. So how and to draw? Well, obviously, we have to make is a conceptual visualization. Okay. In fact, I just we talked about it. Okay, when to draw ERD diagram. I told you it's part of the database design stage. Okay. So when you do designing the database, this is where we have to draw it. So you have a visualization of the entire structure of the database. तब हम इसको draw करते हैं, ठीक है? Technically, we also make it in complex cases for debugging. Now, why debugging? क्योंकि देखो बात सुनो. In this particular example over here, you can see I have lots of tables and they are interconnected. An ERD diagram is going to help me to debug. Debugging actually means is somehow am I making useless relationships between tables or they're useful? If I make an ERD diagram, so I can see visually that, you know what, fine, these relationships tend to be fine, but some relationships probably are not okay. So yes, it does help in you to debug in order to understand the database structure to a larger extent. Okay. Database creation, obviously. Okay. So creation of patching भी हम कहते हैं. Aid is in requirements of gathering. So yes, it helps you to gather a lot of information about the entire database. So आपको ऐसा पता चल जाता है. As far as the ERD notations are concerned, you do know when we talk about an entity such as a teacher, we always draw this way. And I believe all of you know how to draw this in MS Word. Am I right? Okay, you've done this. ठीक है, रानिया ने मुझे शो कराया है, मल्टीपल स्टूडेंट्स दिखाया था. रानिया आपका बिल्कुल ठीक था ये डायग्राम, ठीक है. सो यस, तो जिन्होंने मुझे करके दिखाया बिल्कुल ठीक है. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट, जस्ट डोंट प्लीज लुक एट इट. एट टाइम्स आप समझते हो कि एमएस वर्ड में ये बनाना आसान है एंड आई विल बी एबल टू इट, बट मे बी आपको टाइम लगे. आपने टाइम सेव करना है ना. सो एट टाइम्स प्लीज डोंट assume even the easiest things. आप खुद करो. Okay. So entity attributes. So obviously हमारे जो attributes हैं वो हम कह रहे हैं properties of the features that hold information. ठीक है, उनकी हम बात करेंगे, IDs वगैरह. ठीक है, फिर हम बात करेंगे आपकी प्राइमरी की, फॉरेन की. ठीक है, so that's a primary key, that's not a primary key. You will refer to foreign key. Foreign key is when a primary key, this one, is being repeated in another table. That's one table, another table. So when a primary key is being repeated in some other table, it's known as a foreign key. You do know the definition. Okay, it's a reference of the primary key. You do know that relationships are actually made. Achha, there's a word cardinality. Cardinality actually means is define the possible number of occurrences in one entity which is associated.
सो जो रिलेशनशिप का वर्ड यूज करते हैं ना, उसको कार्डिनैलिटी भी कहते हैं. सो प्लीज यू शुड नो इट. इट्स अ प्रोफेशनल वर्ड. इट्स अ जेनेरिक वर्ड. इट्स नॉट अ वर्ड दैट इज यूज स्पेसिफिकली एनीवेयर. तो यस, सीआई कैन ऑल्सो यूज द वर्ड कार्डिनैलिटी. आपको पता है जी कार्डिनैलिटी का मतलब है, मतलब क्या है? रिलेशनशिप. One to one cardinality actually means is this, which you know. Then you have is one to many cardinality example, which is one to many, primary key and foreign key. Many to many cardinality example actually means is many to many, but we don't study many to many in our syllabus, so we'll not discuss that. Let's carry forward. We have is conceptual, logical, and physical data models. Technically, आपके syllabus में mostly conceptual ही आता है. So if not mentioned, you have to assume कि it's conceptual. अगर लॉजिकल कहा जाए तो लॉजिकल बनाओ. विल टॉक अबाउट किन तीनों में फर्क क्या है. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विच वन यू मेक. ये नहीं कि अपनी मर्जी से आप फिजिकल बना के आ जाओ. ओके मुझे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे. नहीं. इफ दे आस्क यू टू मेक एन ईआरडी, सो यू विल बी मेकिंग कंसेप्चुअल. प्लीज गो थ्रू सिलेबस. मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ कि क्या है फर्क, क्या इन तीनों में आता है. लेट्स हैव अ लुक. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. सो कंसेप्चुअल मॉडल वर्सेस लॉजिकल मॉडल वर्सेस डेटा मॉडल. So if we talk about conceptual, we will have is the field name आपने बनाया हुआ है, and you done that. You have a field name, yes. In logical, you will also have it. In physical, you also have it. Relationship would exist in conceptual, and this and this. Columns, yeah. What do I mean by column? Such as this one, okay, this one, this. This does not exist in your conceptual. Please keep in mind, okay? It does not. It does exist in logical and physical. कॉलम टाइप्स ऑप्शनल है, फिजिकल में जरूर एग्जिस्ट करते हैं. प्राइमरी की फॉरेन की सिर्फ फिजिकल में होती है. रिमेंबर दैट. मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट over here, if I define over here is a pk, okay, this is defining that's a primary key. So this definition of primary key is actually a physical entity relationship diagram that should exist. So please remember this table, and you should know which. So physical में you will be defining the name, the relationship, the columns, the column types, the data types, उनकी primary key and the foreign. Everyone, is this point clear, beta? Iman, Yes. Sara, Rania, Anushe, Yes. Hamna. Yes. जी बेटा, गुड गुड गुड. ठीक है. सो अगर हम conceptual की बात करते हैं, which all of you have actually done multiple times. This is the sort of diagram that you have actually made. Yeah, obviously उसके अंदर you will have is डेटा तो आपने डाला, वो तो आपको पता है. फील्ड नेम्स डालोगे, मगर रफली दिस इज व्हाट वी हैव टू मेक. अगर हम लॉजिकल में आते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉजिकल. ओके. सो लॉजिकल में यू कैन सी इज कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड. ओके. सो दिस इज द वे इट हैज टू बी. सो आपके रिसेंटली में मुझे नहीं एग्जैक्टली याद, लॉजिकल का हुआ है उन्होंने या कॉन्सेप्चुअल का हुआ है. रानिया बेटा, डू यू रिमेम्बर कौन सा का हुआ उन्होंने? सर एक बस कंसेप्चुअल हमारे पेपर्स में उन्होंने फिजिकल का पूछा हुआ है. कॉन्सेप्चुअली का, लॉजिकल का नहीं का हुआ ना. नहीं. अच्छा, बट फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू और इवन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड सजेस्ट कि आपको तीनों को पता होना. सो प्लीज डोंट बी सरप्राइज कि इस दफा अगर वो आपको कह देते हैं कि यू हैव टू मेक इज अ फिजिकल डेटा मॉडल. ओके. फिजिकल आपका जो ईआरडी डायग्राम है वो एक्चुअली यूं एग्जिस्ट करेगा. ओके. आपकी डेटा टाइप भी होगी. You would be defining primary key as well, telling you which is primary key. You can see that. Okay. And if there is a foreign key, आप उसको FK के साथ भी लिख सकते हो इसके साथ. So this would be a structure of a physical data model. So if it does, you should know that there is a difference. It's important for your P3 theory as well. It's important for your P1 theory as well. And obviously for P2 के तो obviously. So how to draw one? ये rules हैं, please ये पढ़ लेना. I'll share the file with you if I have not. ठीक है, आप ये पढ़ लेना. How you're supposed to make one. So example दी हुई है ये एक. ठीक है. So this was better your entity relationship diagram. इससे ज़्यादा डिटेल
में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली यू नो हाउ टू मेक एन एंटी रिलेशनशिप डायग्राम, बिल्कुल ठीक है, but this will only be much more fruitful, obviously, when you will be able to normalize things. And I believe by now, most of you have a very good idea how are we supposed to normalize. If you have attempted at least 3 papers or 4 papers, आपको काफी अच्छा आइडिया होगा कि हमें किस तरह normalize करना पड़ता है. Yes, anyone who, frankly speaking, मुझे बताओ कि normalization में who has a confusion? Please don't hesitate, आप बताओ, so that we can clarify that more. बेटा P2 इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको बताऊं. रीजन बीइंग इज, अगर नॉर्मलाइजेशन में आती है तो आप 2.5 घंटे हैं आपके पास, आप आराम से नॉर्मलाइज कर सकते हो. कामली आप करो. यू कैन आस्क देम फॉर गिव मी ब्लैंक पेपर, यूज अ पेन, ओके, या वर्ड में ड्रॉ करो, वट एवर यू डू, क्रिएट अ मेंटल मॉडल, स्टडी इट थॉरली, मेक अ प्लान. उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट. आई एम assuming that this time the marks of sound and video editing will exceed 30, maybe 35. It's my assumption. I might be right, I might be wrong. मगर it will exceed more than 20. ठीक है. जहां तक डेटाबेसेस आएगा या स्प्रेडशीट आएगा, वेल ऑब्वियसली मैं तो आपको इसलिए दोनों डिस्कस कर रहा हूँ, मगर माई assumption is कि spreadsheets will come. Okay, it's just my assumption. It doesn't mean that I'm right. Okay, so okay, Zara beta, I don't have XLOOKUP installed on this laptop. मैं कल आपसे डिस्कस कर लूंगा XLOOKUP. I'll surely do it. ठीक है. And So can we also revise index and match? yeah, I mean, in fact, uh, I can do that today. We have time. Okay, and let me start revising that. Uh, we can't leave everything for tomorrow. Just 1 second. मगर Also, वो sir, how do we export a video file in AVI format? हाँ बेटा, this point came in, I think so, 4 or 5 years back. It was not a relevant point for Movie Maker because Movie Maker में it was not possible. So इसमें उन्होंने ये किया था कि they mentioned कि इसमें उन्होंने they gave that 1 या 2 marks थे to the candidates. ठीक है. उस वर्जन में पॉसिबल था ही नहीं. आई थिंक सो ये 19 में आया था एवीआई का पॉइंट ना. June 19. जी. तो उसमें ये एग्जैक्टली इट वाजंट पॉसिबल ओवर देयर. उसके बाद they did not give that again. So this is your index and match. रानिया बेटा सुन लो, बल्कि ऑल ऑफ यू. हाँ वैसे अच्छा कि आप ये बात कर रही हो, क्योंकि यस, जब आपका P2 में अगर एक्सेल आता है तो एक्सेल में वन ऑफ द पॉइंट दैट कुड बी डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इज इंडेक्स एंड मैच. प्लीज गौर से सुन लो. अच्छा, नाउ इफ यू रियली वांट टू प्रैक्टिस इंडेक्स एंड मैच रियली वेल, there are 2 papers that you should be attempting. I mean, balki, before I forget, not 2 papers, there are obviously many more papers, but these papers I really like for index and match. One is November 2011. That's your P2. Okay. If you don't get hold of this paper, um, um, if you want to really practice a very complicated one, okay, this is like November 2014. Okay. And this is actually P4. I have video solution of mine for this as well. ठीक है. इसके बाद you also have is June 2010 P2. पुराने पेपर हैं बिल्कुल, मगर एक्सेल चेंज नहीं हुआ ना, एक्सेल तो उसी तरह ही जा रहा है. रीसेंट पेपर उठाओ, पुराने उठाओ. सो रीसेंट में भी आया हुआ है. I mean, you had index and match in 18 और बाकी भी आए हुए हैं, मगर these 3 papers had very complex one. So you have noted it down. Make sure you attempt all these 3 before tomorrow's class. Can you make sure, all of you? अगर आपने कर ली हो, वेरी वेल डन. ठीक है. नहीं किए तो कर लो. अब आते हैं इस पर. सो बेटा इंडेक्स एंड मैच बेसिकली है क्या? इंडेक्स एंड मैच इज टेक्निकली 2 dimensional searching. It's a search function that helps you to search vertically and horizontally both. VLOOKUP searches vertically, HLOOKUP searches horizontally. Okay. Lookup का में फर्क क्या होता है? You do know what is the difference. Anusha, you know the difference between lookup and VLOOKUP? Why would I use lookup function?
Rania beta, why would I use lookup function? Yeah, anyone wants to answer me? This is used to look up a value while we look up के लिए उसके अंदर there's vertically columns के अंदर something. जी बिल्कुल, मगर देयर इज और अनुष्य है ही नहीं इधर, सॉरी मैं अनुष्य को रेफर किए जा रहा हूँ, वो तो आई ज्वाइन नहीं किया जी. एनीवन एल्स? यस, वेयर इज आजम? किन्होंने ज्वाइन किया हुआ है यार? दिस इज सो बैड, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे बाकी? Sir, there is a horizontal lookup as well that only looks एग्जैक्टली up horizontally. जी. नो बट माय क्वेश्चन Look इज up के अंदर there you can look up vertically and horizontally. ओके ओके, आई एम ग्लैड आई एम डिस्कसिंग दिस. ओके प्लीज इसको गौर से सुन लो बात को. So you all of you do know why do we use VLOOKUP? Please be honest, all of you. Yes or no? You know VLOOKUP such a vertical, आपको Yes. पता ही है ना? Yes, ठीक है ना? sir. Yes, ठीक है. Can you tell about X? Uh, oh, yes, okay, right. मैंने दोबारा फिर पूछ रही है. Okay, right. So what I will do is, in case of ICT, मैं काम करूँगा. I'll just copy this. And what I'll do is, I will. In fact, no. New context tab. Okay, I will insert, copy, I will paste this here, और मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, डिलीट कर देता हूँ, सो दैट कंफ्यूजन खत्म. अच्छा, मैं क्यों सब कुछ कर रहा हूँ आपको अभी समझ आ जाएगी. ठीक है, मेरे पास ग्रेड्स हैं, मैं काम करता हूँ कि मैं इधर आता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल से इज इक्वल्स टू वी लुकअप. आई वांट टू लुक अप फॉर दिस कॉमा फ्रॉम दिस टेबल. ठीक हो गया, पूरा भी सिलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है मुझे. ठीक कर लेते हैं. And obviously, you do know if we have to lock it, we will actually press is F1, F4, and or yeah, F4. ठीक हो गया. Now, from which column do I want to get the value in order to get the percentage of ICT? Tell me. One. Yeah, I'll type 1 and I'll comma 0. I'll not get the answer. देखो बेटा बात सुनो. If I want to get, let's say for maths, मैं पहले इस बात को explain कर. मैं अगर use करता हूँ ना VLOOKUP, so this is my lookup value, comma. This is my table array. This one, yes or no? Okay. And let me just F1, F4 lock it, comma. When I say column index number, so actually I mean is 1, 1 and 2. So 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि I want to compare the second column. I want to get the answer from the second column. But after referring to the first column, तो आपकी जो lookup value है ना, जो array है, वो एक्चुअली आपके फर्स्ट को कंपेयर करते हैं सेकंड के साथ, या फर्स्ट को 3 के साथ, या फर्स्ट को 4 के साथ. So when we select a range, obviously the first column is being compared with the second, the third, the fourth, or the fifth. उसके बाद comma 0 gives me the exact match. And then I get the answer. So you get the point. So when we select a range, if I select this range, इसका मतलब होगा percentage of I streak should be compared with, if I write 2 with grades, and if I write 3, it means this should be compared with this. So whenever you select a range, always your first column is compared with the column index number you entered. This is the way आपका VLOOKUP काम करता है. आपको मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? Yes or no? Yes. Yes. ठीक है. This is the way VLOOKUP works. This is the reason why I'm stuck here, क्योंकि मैं जब VLOOKUP यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसको बता तो रहा हूँ ये मेरी लुकअप वैल्यू है, मैं उसको बता रहा हूँ कि ओके फाइन यू सेलेक्ट दिस रेंज, मगर गलती यहीं शुरू हो गई है ना. हाउ कैन आई कंपेयर द परसेंटेज विद द ग्रेड? तो वो तो ये तो सिनेरियो चेंज हो गया. मैं आई वांट टू कंपेयर द ग्रेड विद द परसेंटेज. मैंने बैकवर्ड सर्चिंग करनी है. यस और नो? आई हैव टू गो बैक. पहले आईसीटी वाज इन द फ्रंट, नाउ इट्स एट द बैक. इशू समझ आ रहा है आपको? सो VLOOKUP cannot do backward searching. VLOOKUP is only good to do forward searching.
by comparing the first column with the column index number. सेम केस आपका एज लुकअप के साथ, एज लुकअप भी आपके रो को सिलेक्ट करता है. सो दिस इज वेयर योर सिंपल लुकअप कम्स फॉर रेस्क्यू. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें योर आंसर इज इन द फर्स्ट कॉलम एंड योर लुकअप कॉलम इज इन द नेक्स्ट कॉलम, आपका भी लुकअप में काम नहीं करेगा. या तो आपको एक्स लुकअप यूज करना पड़ेगा या तो आपको लुकअप यूज करना पड़ेगा. इसलिए एक्स लुकअप एक्चुअली इज नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट. एक्स लुकअप इज एन ऑल्टरनेट वेज टू यूज लुकअप, वी लुकअप एंड एच लुकअप. मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ इंशाल्लाह. सो लेट्स गेट टू द पॉइंट. मैं ये कह रहा था कि अगर मैं अब इसमें लुकअप यूज करता हूं, सो इफ आई यूज लुकअप, सो दिस इज माय लुकअप वैल्यू, एग्री विद मी, कॉमा माय लुकअप वेक्टर मींस. अच्छा, अब इसमें वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या है? वेक्टर का मतलब होता है कॉलम. वेक्टर का मतलब होता है कॉलम. लुकअप वेक्टर मींस which particular column you're looking from, looking what the lookup value. So आपकी जो lookup value it exists in which particular column. I will guide and I'll tell it does exist in this particular column. Okay, and I'm going to lock it. I'm sorry, I pressed the wrong thing. Here we go. Oh, F and F4. So comma, it says okay, you want to get the answer from where? I'll tell okay, I want the answer from this particular column. Okay, now again I will press F and F4. I lock this. So if you look at the syntax, lookup value has been defined, lookup vector has been defined, and the resultant vector from where you want the answer has been defined. Now you get the relevant answer, and all of them are correct. Yeah, obviously, वो इसलिए आपका टेक्निकली गलत आ रहा है क्योंकि मैंने उसको somehow इसको मैंने लॉक नहीं किया था. So no problem. Here we go. I'll replicate again. ठीक है? So this is what lookup is. I hope the point is clear. Why do we use lookup? Yes or no? Yes, sir. Clear हो गया? Well done. Now let's come to index and match. Index and match क्या चीज है? Index and match basically because there's no point कि मैं आपको index and match कराना शुरू करूँ, आपको वो clarity पहले ना हो. Index and match कहता है कि I want to find out. Okay, index and match actually has two lookup values. One for the row, one for the column. Lookup के पास एक lookup value थी, यहाँ पे दो lookup value है. मैं कहता हूँ अक्टूबर में और वीक 3 में बताओ कौन सी वैल्यू है. वो बताएगा अक्टूबर और वीक 3 में 5 to 11 है, बिकॉज इट विल इंटरसेक्ट दिस with this and tell me that this is the answer. If I enter June and week 1, I'll get this. If I enter May and week 4, I'll get this, obviously. So again, your index and match has two lookup values. अब index match काम कैसा करता है? Index match को समझने के लिए, if you look at the syntax, it says, give me the array. You'll give the array. Then it says, give me the row number and the column number. अब रो नंबर बेसिकली क्या है? रो नंबर मुझे बताना पड़ेगा कि let me do it for you. So if I select the array, then it says comma, tell me the row number. So row number, let's say if I'm referring to April, मैं कह सकता हूँ 3. And if I want week 1, the column number I can say 1. मगर this is not the right way ना. Every time you just can't enter numbers manually yourself. फिर इस फंक्शन का फायदा क्या हुआ? अगर आपने खुद ही मैनुअली देख के सब आंसर देने हैं तो आप मैनुअली काम कर लो. Are you getting my point? So whenever you apply functions in Excel, in spreadsheets, they have to be dynamic. They should not work manually. So how do I get the row number? That's a big question. How can I find out कि October की numeric position इस range में क्या है? मैं दोबारा repeat करता हूँ. I am saying is I want to find out the numeric position of October in this range. Are you getting my point? Then column number. I want to find out week 3 की numeric position इस range में क्या है? If I know that I have a function that can help me to find the numeric position of a data within a range, मेरा काम हो गया. उसके लिए क्या है? उसके लिए we have match for our rescue. अब match function को पहले डिस्कस कर लेते हैं. Match function basically कहता है, okay, you know what? Tell me what you're looking for. मैं कहता हूँ उसको I'm looking for week 3, comma. और कहता है you're searching week 3 from where? I'll guide this from this array. Okay, array means the range.
फिर मैं कहूँगा कॉमा 0 बिकॉज आई वांट टू गेट इज द एग्जैक्ट मैच। वो मुझे बताता है कि आपका जो वीक 3 है ना, उसकी न्यूमेरिक पोजीशन 3 है इस रेंज में। तो ठीक है। सेम वे इफ आई डू दिस, if I say October is I'm looking for October, I'm looking for October from where? From here. Oh, मैंने गलत select कर दी, sorry. I'm looking for October, October, comma, from here and comma 0. So it will tell me कि जी आपका October exist आ रहा है 10th पे. Obviously, if I change this from October to December, let's say, so it will tell me that December exists at the 12th numeric position. So match क्या कर रहा है? Match tells you the numeric position of a data within a range. Is this clear what match is doing? All of you? Yes or no? Yes, sir. Right. Anusha beta? Yes, sir. Good. So if I do now this is, if I apply index and match, I would say over here is index is give me the array, so I provide the array. अच्छा array में याद करना आपके field names नहीं आते. It's a very important rule. Match. अच्छा, so मुझे कहता है कि array के बाद row number दो. So right now I just told you in order to find a numeric position of a data within a range, मेरे पास function है जी, मेरे पास match का function है. आपको किस तरह याद है? आपने notes बनाए होंगे. You would have 25, 30 functions के notes. जिस तरह आप काफी most of you have done it. Okay? So if you know which function does what, आपको click कर जाएगा उसी वक्त. आपको okay fine I can use match. And match से अच्छा पहले उसने क्या row number ना, row का है पर. It says row number. So पहले match में I'll deal with the row. So वो कहेगा okay which is the row value match की. Row में आ रहा है मेरा December. ठीक हो गया. फिर वो कहेगा can you tell me कि इसकी array कौन सी है? I'll guide that. Comma and 0. फिर I'll put comma again. Says अच्छा मुझे column number बताएं. मैं दोबारा match यूज करता हूँ. अब match में वो कहता है okay tell me the lookup value. मैं कहूँगा week 3. It says where does it exist in which range? मैं कहूँगा ये. फिर मैं कहूँगा comma 0 because I want to guide कि actually it's over here. I'll click and successfully I'll get the answer. So you can see is week 3 में और ये क्या आ रहा है. So if I change this into week 1, so obviously I'll get the right answer. ये तो बहुत छोटा डेटा है, बहुत जितना मर्जी बड़ा डेटा हो. Index and match can help you to search vertically and horizontally. This is why it's known as two-dimensional searching. Okay, it's a very, very important, good function. I hope it's clear, all of you. Yes, sir. Yes, ठीक है. जिस तरह ज़ारा ने कहा कि X lookup डिस्कस करना है, whatever points you have in your mind, make a list of them. तो कल स्प्रेडशीट्स को हम टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली. Everything. Let's finish all the discussion advanced तक स्प्रेडशीट्स की. Make your queries ready. हम will keep on discussing tomorrow. ठीक हो गया? Meanwhile, आपने ये पेपर अटेम्प्ट करने हैं. I will share the video solution of this as well. I know it's a lot of work, but I'm sorry, you have 24 hours and you can do it. ठीक हो गया? Right? Any question? Right. Okay. बेटा ठीक है मेरे अब मुझे या कल ही या I'll share with you वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट. मे बी यू वर नॉट इन द क्लास लास्ट टाइम डिस्कस किया था. मैं दोबारा कर दूंगा. ठीक है, ठीक है सारा. या ये मेक अ लिस्ट ऑफ योर पॉइंट्स और मैं कल को डिस्कस करूंगा. इसको भी लिख लो. ठीक है, गेट बैक टू मी टुमारो अगेन. ओके, चलो ओके बेटा, सी यू टुमारो सेम टाइम. ओके, अल्लाह हाफिज. Love. अल्लाह हाफिज. Love this.